बस हमें लॉग आउट करना है। तो हाँ, अब नहीं मैं अब चल मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हो गया लाइट चल रहा है। हेलो, हेलो। वो कैसे तो बोला हाँ ये ठीक है। So as we are talking, as we are talking at the beginning of the session, that the topic which has been given to me is exactly in terms of data collection. So the main purpose of mine is, first of all, to have the placement of my topic in context with the syllabus which has been given to you all. So, and I want to have the linkage of my topic with the past topic which has been discovered, which has been discussed, and with the topic of the future of your syllabus in context with which is yet to become. So that exactly it can help you in terms of knowing where we are and what we are doing. Many times, what happens, the topic is discussed, it's very easy going, it's very understandable, but later on, we do not know in actual what we have to do. Okay, in getting of marks, in getting of your coursework completed, very good, fine, right. But in terms of the real work of yours, in terms of when you go for the PhD work, it becomes essential for us to know what I have studied and what I am applying and what I have studied. Passing of marks is okay, fine. 50% is required, you are passed. You bring 100%, very good. But you are not able to apply. Let's see, for example. Um, there's a very good doctor, right? MBBS, MS. Why I'm saying MS? Because when we say MD, they are called as physicians. They do not do operations. But when we go for MS after MBBS, it is Master of Surgery, right? That means you are having operation. That means you are going to operate. You are going to operate the patient. You have studied very good in your MBBS first year, second year, third year, fourth year, fifth year, and your MS 2 years, and you have done excellent in terms of your theoretical work, right? You have secured very good marks, right? But when asking you in terms of applying, right, how much you apply, that is exactly what your skill is. And if you are doing such kind of what is called as thing which is not being effective to the patient, so you will not be a good doctor. That means what is happening? You have secured highest. Maybe you can be a gold medalist, you can be a silver medalist, you can be the highest topmost person of your class. But if you are not able to apply it in a practical sense, you are not a good doctor. That means what is happening? You have studied very well. The teacher came, he taught you, it was understood. Okay, excellent, very good teacher. That is very good. Things are there. The syllabus very good. Everything very good. Understood. Marks 100%. Now, when it comes to application, you are going for consulting of books. I have to go for the revision because when I do go for the exams, I used to revise. When I used to give the papers, I used to revise. So patient is coming, I have to go for the revision. So doctor has come. One patient came, you consulted, gone. Second patient again go for the revision. So are you this type of a doctor? Okay, second patient is gone, third patient is coming. Again going for the revision. Or maybe patient is coming and he's asking you for the remedy. Achha, what type of sickness you have? What type of disease you have? What type of illness you have? Okay, this is this. Let me consult the book. Okay.
You have come, okay. You have this. So this is their baby. You are not going to be able to do this. That means what is happening? You are not able to connect the things. Whatever has been taught to you in your theory, which you call as excellent teachers, excellent syllabus, excellent everything, now difficulty is coming with you, not with the person who, those person they have done their duty, but you are not going to apply it in a proper way. So what happens? When you go for the consultation after that, who is a good doctor? Who is a patient, who is having large number of patients? Why you look for these things? Go for a person, consult and go for the operation. Don't go for the operation. Unless you have the feedback. Oh, some 100 people are coming per day. Oh, some 50 people are coming per day for consultation. And some 10 to 20 to 30 operations per day. And this doctor will be awesome. That means, what is there? He's not God. He's not directly coming from up. He's from within us only. What he did, whatever he studied in theory, he was able to convert into the application or in the practical. And that is what nowadays we are giving importance to skill. Skill people. What is skill people? Skill generally we use in terms of labor class, but skill is coming also in terms of the people who go for the operations. That is what we are saying. Okay. For the physician, you are having very good theory, that's fine. Yeah. You can go ahead. But when it comes for the practical sense, you should know where the things are, how to locate the things, how to cure the things, how to correct the damage which is there in the body. All these things you have that background. You have to convert that background into your own sense. So that is what I am saying. I am trying to connect my topic of mine in terms of placing of my topic in the syllabus. Right? So you all know it is unit 4, you have studied unit 1, 2 and 3. That means somewhere, all these units, what we are talking is there in terms of this particular process. This is actually what you go for the PhD. Maybe this is not again, all, all the practical part is coming to theory part, right? So this is a theory part, but this is very, it's a real part, what you do in terms of your PhD. So this is what I was trying to have the linkage, and I was trying to have the linkage with the syllabus also. This is all. It might have been taught to you by a particular teacher, but again, it is my duty to recall the things and to come to my topic where I have to start. Right? So now we'll be going one by one, then we'll be coming to my topic. Uh, Now, unit one. Unit one, see. Uh, Let me see the syllabus. Okay. Unit one, basic concepts of research. You have studied. Now, what is basic concepts of research we are talking of? See, researcher mind formulate research topic. This is what we are talking in terms of unit one. Now, this is theory. This is theory. Syllabus unit one, unit two. Not two, sorry. Unit one. Unit one coming covered in two stages. It's your approach. First stage. Second is covering the topic research. So that is what we have studied in unit one. That means we have studied what the subject is all about, what are the characteristics of the subject, what are the nature of the subject, what are the advantages of the paper, what are the disadvantages of the paper, what are the stages which are involved in the process, and above all, what are the challenges in this particular paper. But it says this was the theory part. In real part, it is that why I am doing. This is how you start. Why I am doing PhD. Just for a degree. Okay, fine. Okay. But what will happen? I will do my business. Fine. Do your business. Do it. Then it's okay, fine. I want the degree and I am going for a business. Fine. Because degree will not be required for a business. Because business, a person who is 10th class also, he can also do the business. Dhirubhai Ambani, he was not 12 pass and he became the one of the biggest, he is having one of the biggest empire in the country. Not in the country, but he is known in the world. The degree nowhere. After the day, sir, you have MBA degree? Okay. MBA?
it was difficult to have the school days clearance. What is MBA? That's very big deal for that person. But for you, it's very casual. MBA? PG? I'm doctorate. But you're not due by one. एक person उठ के बता देगा I'm due by one. Just raise your hand and say I'm due by one. Yeah. I tell you, yeah, I'm due by one. This is what happens. So this is exactly the very first that why they are why I am doing my research work or why I am doing my PhD. Or yes, I am having a interest and I will be able to do that. The first part. Second part, as the teacher might have taught me in terms of this student one, whosoever the teacher was, that you go for knowing any kind of. There are two things when you go for the very first thing. What are those two things? One is opportunity, other is problem. That means when you frame a topic, when you go for the topic, you search two things. Is my subject, is the particular environment, is the particular country, it is dependent upon what area you are taking in terms of your study. So environment, so subject, so some organization, so society. So you're talking of what? You're talking of society problem, you're talking of country problem, you're talking of subject problem, or you're talking of some other problem. That means something which is going to come in the future, which we can use it for the upliftment of a people. Corona was a problem, was not an opportunity. But technology of the future can be enough. So what topic we have to about is the two broad bifurcation. So my topic is based on remedy of the problem or remedies of the problem. Because generally we do not go for problems. We take a particular problem. And then second part, no, I will not touch the problem. I will see the future. And I will talk the effectiveness of that particular future. And that is so this is the second part, and then you go for now. Okay, fine. I am working on this area, X area, Y area, fine, Z area, fine. Now what you do? You convert it into your words form, language form. And now, universal language is English, mother tongue Hindi, Urdu, whatever it is. So, Sanskrit, whatever it is. So, let's say universal language English. So we are going to convert it to the language which is common. This is the second stage. And when we combine these two stages, it becomes unit one of your basic concepts of research. Wonderful. Still, I haven't touched my topic. Now, coming to the second part. Second, as per your syllabus, your second unit is literature review and defining the research problem. Right? Somewhere research problem I have already talked of in your second part. But my third stage and your unit 2 is review. Unit 2 is review the literature. Problem part I have already taken. Okay, na? Now, literature review. Teacher might have taught you that you when you go for consultation of certain kind of sources which are already there in the existence related with your topic. That is exactly the literature. So my second part is also very important. देखिए बिल्कुल है and this is what you have to do in your PhD. I'm not talking. I'm talking in the theory sense, but here I'm talking in the real sense. So first you make up your mind. Okay, fine. I will qualify the exam of PhD. Then I have to give my coursework, and then I will be given the guide, and then the topic, and then my work will start. This is how you go for in the real sense, and this is what we are talking about, and this is the syllabus. Okay. So everything is there. Second part we have covered. It is understood to you. Now coming to the third part. That means your unit 3. It was hypothesis and research design. Right? So hypothesis is like this formulate hypothesis. So real way you go for. But here there is a slight because when we go for hypothesis, there is in the real sense there is a slight addition you have to do. That is
you have to decide certain kind of objectives, preliminary objectives in the sense of minor or major, which you have to achieve. And certain kind of questions, not exactly questions for your questionnaire, but certain questions which you are asking with yourself related to the topic. Those questions will help you in framing the objective. And then you come to construction of your hypothesis. That is unit. So see how the theory is moving. This is theory. How the theory is moving. How the theory is moving. And this is the rehearsals. How this real your real PhD work as per the guide in the future sense. Linear. But it is your ability how you convert this thing into your rehearsals in your practical. The better you will be able to convert, the better the doctor you will be. Otherwise, you will be one of the doctors which is there who is not knowing. You are having a degree, very good. Everyone is having a degree, no issue. Okay? So this is there, understood? Abhi tak my topic, we haven't reached to my topic. Now, coming to the next part. Uh, See, it says somewhere it's talking of research design. So design again unit three. See, researcher approach and strategy. That means we are talking in terms of what the teacher might have taught you. That we are exactly somewhere planning in terms of what we have to do in conduction of the research or in conduction of the PhD. That means you are planning your future actions. Somewhere the teacher might have taught you in the sense that design is the future course of action of the work. So it is dependent on the person who is doing the work. So researcher approach and strategy. I uh, let's take it this way. Take it this way. Leave this page. Take it that let's assume that you're a director of a movie. Okay? You are going to have a tragic movie. You are going to have a movie of a comedy, or you are going to have a movie on a real life, or you are going to have a movie on a some, some thrill type of activity. So it is you. It is a design which you are making of you of your movie in the future sense. It is dependent upon the researcher approach and strategy. And it is uh, unit 3 research design. Because I am not the thing, so I will not plan what I have to do. You are doing, you have to plan what I have to do. I have to make a tragedy go sad ending. So that you have to see. No, some happy ending that you have to see. So what your work will be in the future, you have to see. In the form of design or in the form of approach. Okay? Now somewhere we are coming close to my topic, that is data collection which we are talking about. This is one of the issue which is there, one of the part which is there, uh, uh, which is in your syllabus, but it might be at the beginning somewhere. That is that means ethical issues means that when you do work in an original way. Don't copy the work. Don't cheat the work. And because see, there are many theses kept for the consultation. One of your theses also there these days. No one is watching. No one has time to watch. But if it is this thing will go and consult in the library. So that is what the part which is coming. It is somewhere in your maybe unit 1, 2, 3, 4, somewhere some teacher might have covered this particular part of it. Unit 1, 2, or 3. Yes. Now, research design development we have talked of. Next part comes. In between research design development and analysis, data analysis. Now, this is your unit 4. This is unit 4. Okay, unit 3. Now, so what is there? We have talked in terms of research design, that is the future course of action. Now the part which comes in is that we have to collect the data and we have to analyze the data, and this is unit 4, data collection and data uh,
data collection and data analysis. That is what we are talking here in this particular unit. Statistical data collection and statistical analysis. So this is a topic which we are going to discuss. But it is coming, यहाँ पे it is written analysis and interpretation of data. But when we go for the analysis, we have to correct. So this is a small topic of yours, a small part which has been given to me, that is data collection. And here we'll be talking of tools, techniques, what types of data are there, all these things we'll be talking here in a very short. And it's a very short. And then we have the analysis. As per your syllabus, you have the analysis of uh, measure of center tendency, dispersion, statistical study, uh, regression, multiple correlation, all these things you are going to study in your analysis. Right? That means what is there? Up till here, we have talked of design part, then we go for the collection part in the real sense, not as first label. In the real sense, we go in this way. We have constructed the design. Now, design, all these designs, whatever the classifications were there, it is understood that all those classifications are coming here. Uh, Explorative research design, descriptive research design, experimental research, all these things you have to choose here. All these things you have to have before the data collection. We have descriptive which are two categories will be going on. What category will be talking about? So all these things will be coming into that particular category of the category. Understood? Now, now, so that means now we have come to the collection part, and now we will be talking of a topic, and then after that we will be analyzing that. Okay? This is unit 4, and then comes your what is there, that is unit 5, which is that is the second last stage, that is submit report and give presentation. That means unit 5 and unit 6. Unit 5, you make a thesis writing, publishing, all these things. Okay? And unit 6, we have computer applications. That means all those things we use Google, we use presentations, we use Excel, we use certain kind of devices, we use maybe SPSS, maybe MOS, whatever you software you use for this study. All these things, because you are going for the report now. Right? So you have analyzed and you will be showing those collection and analysis in your PDF form or Word form or Excel form, data in the Excel form, all these things to your report, which is coming in Unit 5 and Unit 6. Unit 5 is your construction of your thesis with paper. Side by side, we require certain kind of paper because that is mandatory. As per the university norms, you should have one or two research papers, two research papers that is related with it. It should not be some extra paper. My topic is Z, I'm writing on topic A. No, it should not be that. If your topic is Z, it should be related to the topic Z. If your topic is A, your topic should be related, your research paper should be related to A. If your topic is B, your research paper should be related to the topic B. So this is the part which we are talking about in this particular chapter. And then comes your, that is the last part, that is management decision. It means that you go for your RDC, for your PPT of your thesis and your PhD work. So this is exactly you are getting my point. What we are going to discuss today, that is data collection. Where data collection is? In between analysis and design. That means till design I will do the work, and after that I will collect, and then I will analyze, and then again moving ahead. Huh. You can contra me in some cases. Even we guide the scholars that in some cases you go for writing of the research papers here also. It's your choice. It's your choice. Sorry, not your choice. It's your guide choice. We go for writing the research paper at this level also. We do the literature.
What is that? You have consulted some 150, let's say for example, or let's say 30, 40, 20, 30 your papers, and on the basis of those papers, research papers, you analyze, right? That means no cramming. You analyze, right? You analyze the things and you get come with the result, and that you try to uh, publish it. So you can publish the paper, but actually you haven't done your completed your work of PhD. You are at the beginning. So when you are at the beginning, on the basis of some work collected, I mean right now we are going to talk this particular category, types of data. Here we will be talking that on the basis of some collected work, you are writing the paper and you are publishing. So here you can go, and otherwise, this is the part that is in between your making of the report and analysis. You go for publishing of the papers. It's your choice, and not your choice. Okay, sorry, your right choice, as per the discussion with the research. Okay, now, so this is completed. Your complete part. Ah, ah, just a minute. Just hold on, hold on. Okay. Uh, let's say for example, there are two factors which are there. That is independent factors and dependent factors. Right? Independent factors are those factors which are not as let's be very simple. As the language saying independent. That means it is not dependent on any other factor. It is working on self. That is dependent, right? That is when one factor is being changed, the other factor is in. Dependent. Is there only one independent and there is only one dependent factor? No. There can be a larger number or any number of, or whatever you are selecting in a group or in a single way. That means there are larger number of independent factors and there are much more larger numbers of independent factors. Right? Let's say for example, uh, which branch do you belong? Uh, Mechanical. Okay, ठीक है. Let's take एक बस आ गया बस एक मिनट let me tell you your let's take for example efficiency of machine one part but let's take it. Let's come on a common platform efficiency second wear and tear third better servicing of the machine. Let's take two. So what is there? Efficiency is dependent on these two parts. So I'm studying on these two categories only. Efficiency
servicing their area. Are these two factors only there? Are this factor is there only as a dependent independent? No. As a mechanical person, there can be n number of dependent and there can be n number of independent factors. It is on the basis of review the literature, you select certain category of factors and you develop relationship. So your importance of factor may be some other, and my importance of factor may be some other. Maybe my criteria of studying the literature review and selecting the factor will be different, and yours will be different. And that is called as, I'm just coming, I'm taking your question, and that is called as researcher approach and strategy. And that is why I stopped you when I was discussing this topic. What I said, leave the PhD, let's take that you are a director of the movie. You are constructing a tragic movie. I am constructing a tragic movie. Sad ending. You are constructing a comedy movie. On the basis of the living literature, you have taken the comedy factor. I have taken the tragic factor. That is researcher approach. Now you say. That language you can correct as per your common. No issue. No issue. देखिए यहाँ पे रिसर्चर अप्रोच से मतलब यहाँ से नाउ agree, but you take it from my point. यहाँ पे we are talking in terms of individual. I I'm not telling you other. So that I clearly. I take up individual. I'm doing research. I'm doing PhD. You are doing PhD. In my sense, what my approach will be. In this way, I'm talking to you. Okay? Clear? Thank you. Any other questions which are there? Sorry. Now this is the topic which has been given to us, and this is we have to start today. And we'll be talking in terms of let me go as for the syllabus. Methods of data collection, collection of primary and secondary data, experiments, surveys, selection of appropriate method for data collection, quantitative methods and importance, questionnaires, surveys, and schedules. This topic I will be trying to cover maybe some part today, some part tomorrow. By tomorrow, we will be completing this particular topic. So there will be an exercise for you all for tomorrow. Before starting my today's topic, that is data collection. That is, you have to prepare a questionnaire. And let's take the general way. Let's take we all are you all are researchers. Okay. Uh, have to think in a way that is common to everyone because यहाँ पे तो mechanical is also sitting and civil is also sitting and management हम लोग बैठे I'm from management and हम लोग बैठे हुए हैं ऐसा कुछ बनाया जैसे रिसर्चर मतलब अगेन नॉट अदर रिसर्चर का मतलब आप a feedback of you have to prepare a rough question, not exactly a very furnished way. Rough question we'll be discussing tomorrow, and one by one we'll be talking of. This is a homework. Tomorrow we'll be going for this particular part because by the end we'll be talking this homework. Tomorrow we'll be coming to the last part because देखिए last part है आपके syllabus का questionnaire collection. So we'll be taking a homework, questionnaire collection, topic complete. Next teacher will be coming from the next lecture, that is maybe next Friday, data analysis, department of mathematics. So your homework is maybe certain changes we can go for. Feedback of PhD scholars towards the RDC set. ऐसा कुछ बना दें सबके लिए होगा अब हम मैनेजमेंट का बनाते हैं तो हमारे लिए होता है मैकेनिकल का बनाते हैं तो आपके लिए होता है आपको एक क्वेश्चन है लेट्स गो इन हिंदी फीडबैक कंस्ट्रक्टर ऐसे देखिए कंस्ट्रक्टर क्वेश्चन है ये होमवर्क है आपका टुमारो विल बी टॉकिंग ऑफ आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा चाहे सॉफ्ट कॉपी में चाहे
hard copy, you have to come and present. Maybe few or maybe all, depending upon the time. Construct a real questionnaire showing the showing the feedback of article related towards the construct a real questionnaire. What was the language? नहीं आपकी language नहीं आपकी हाँ, construct a questionnaire showing the feedback of uh, PhD research scholar, PhD research scholar, PhD research scholar towards RDC से. Check. It's now common for everyone. Towards RDC से, RDC ऐसे करके towards RDC. या PhD सेल कह रही है जो भी आप लोग RDC के towards RDC. अभी आपको पहले ये हो गया देखिए आप अभी देखिए आपने देखिए कल का होमवर्क हो गया ना अब आइए कोई क्वेश्चन क्या डाउट है तुम्हें हाँ आप बताइए डाउट फीडबैक वेरी गुड नेक्स्ट थिंग लेट्स गो टू द स्कूल डेज देखिए आई एम टेकिंग द थिंग्स ट्राई टू टेक द थिंग्स इन अ वेरी सिंपल वे स्कूल में क्या होता था कोई एक टीचर होता था तो हम लोग क्या करते थे जब क्लास 7 में अगर इस टीचर को मिल गई तो ये टीचर मिल गया तो समझ लेना बस लाइफ बिल्कुल वो वही होगी गॉड नोस क्या होगी वो ये अरे अरे एक्सीलेंट हेवन मतलब गुड अब ये क्या है दिस इज व्हाट दिस इज कि आप कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे क्या क्वेश्चन बनाएंगे कि इन टर्म्स ऑफ आरडीसी सेट यानी कि आपका जो अभी तक का एनालिसिस रहा है उसको एनालिसिस कलेक्ट नहीं लिखना है एनालिसिस नहीं करना एक क्वेश्चनेयर बनाना है क्वेश्चन बनाना है जिसमें आपको ये पूछना है कि ये आरडीसी सेल कितनी इफेक्टिव आपको लगे या जो भी आरडीसी सेल है या आरडीसी कह रहे हैं या पीएचडी सेल ये कितनी इफेक्टिव है तो आप पहले कि आपका जो भी क्वेश्चन होते हैं डू नो व्हाट आरडीसी इज डू नो व्हाट पीएचडी सेल इज हाउ मेनी मेंबर्स जो भी है जनरल चीजें जो नेम सबसे पहले नेम लिखिए मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो भी आप लिखते हैं उसका आप शुरू कीजिए स्टार्टिंग इसका अभी हमसे ना पूछिए क्योंकि फिर हम फिर कल क्या बताएंगे इस पर कुछ क्वेश्चन बन जाइए सम रॉन्ग करेक्ट गुड बैड अभी ये आपकी ये किस बिहाफ पे चल रहा है आरडीसी की बिहाफ पे चल रहा है ना तो पीएचडी सेल है वो उसको चला रही है ना बस तो अभी तक क्या आपका कुछ क्वेश्चन सुनाइए क्या लगा कोई डिपार्टमेंट होता है ना हम कहते हैं मैं डिपार्टमेंट एंटर कर गया तो डिपार्टमेंट कुछ दिख रहा है ना बिल्डिंग दिख रही है टेक्नोलॉजी दिख रही है इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है सब दिख रहा है तो आप इसी कुछ क्वेश्चन सुनाइए वही मेरे कुछ रॉन्ग राइट तो पता है अभी सब बता देंगे बिल्कुल करेक्ट हो गया आई एम डॉक्टर तो हम ट्रीटमेंट के साथ कैसे डिस्कस करेगा हमें तो आपको कैच करना है ना तो कुछ बनाने लगिए रॉन्ग बनाने लगिए मजा है बात करिए हाँ योर चॉइस ठीक है कल लेके आए तो देखते क्या चलिए देखिए सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एबीसी कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो वी स्टार्ट फ्रॉम द एबीसी तो द बिगनिंग ऑफ दिस जो लोग डेटा बार कह रहे हैं ये डेटा है क्या अभी स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस में हमेशा हर क्लास में ये डिस्कस होता है और आपको भी पता होना चाहिए हर कोई चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है एवरीवन इज नाउ डेज इन्वॉल्व इन द किचन लेट्स स्टार्ट द किचन don't take it otherwise. I explain my topic, right? Don't have the other angle of. Let's start from the kitchen. What happens? Your mother, your wife, or you as a person, आप हैं owner of the house, so you your maid servant,
जनरली क्या होता है कि आप कहते हैं ऐसा है कि आज टुडे वी आर गोइंग टू हैव दिस थिंग इन लंच और ब्रेकफास्ट डिनर तो भाई ये चीज वी डू नॉट हैव सो यू ब्रिंग दिस यू ब्रिंग दिस थिंग्स यू ब्रिंग वी वांट सर्टेन आइटम्स लेट्स टेक फॉर एग्जांपल आप नॉन वेज खाते हैं या वेज खाते हैं तो वेज खाते हैं तो वेज में सबसे अच्छा पनीर होता है तो भाई पनीर हमारे पास है नहीं या आई डू नॉट हैव पनीर आई डू नॉट हैव ग्रीन पीस होती मटर आई डू नॉट हैव ग्रीन अब आप नॉन वेज खाते हैं तो आई डू नॉट हैव चिकन आप चिकन खाते हैं हाँ चिकन तो है नहीं तो उसका वो तो है नहीं मसाला तो है चिकन मसाला तो है नहीं बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी मसाला है नहीं राइस है नहीं तो यू आस्क योर सर्वेंट टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग इज कि भाई राइस ले आओ बिरयानी बन रही है पुलाव बन रहा है तो राइस ले आओ ग्रीन पीस ले आओ चिकन ले आइए पनीर ले आइए जो भी आप रखें आप वो आस्किंग द पर्सन राइट 2% बाजार में गया और सब तो हम लोग समझ गए ना रिलेटिव के लाइफ जनरल लाइफ सब लोग करते हैं कभी ना कभी चाहे जितने बड़े रिच हो चाहे जितने बड़े आप पुअर हो ये सब कोई करता है यस यू आर देयर इन द क्लास सो what is it? कि when you go to the market, when you go to the market, you have the things आप गए आप बाजार से गए किसी को ढूंढ रहे मैं जानता हूँ कि चीजें बता रहा हूँ सिंपल वे फिर आ जाएंगे यहाँ पे टॉपिक या गया हूँ टॉपिक बोलिए so you went to the bazaar you ask for the paneer oh, this paneer is not looking of a good quality ये देखो I will not take it purposely I am saying it to you now you went to chicken भाई chicken का जो वो है quality is not coming that way but somewhere else okay भाई जो मसाला चाहिए वो मसाला इज नॉट अवेलेबल है इन दिस पर्टिकुलर शॉप समवेयर तो इन दिस वे राइस जो चाहिए हमें इंडिया गेट राइस दावत खास राइस नॉट बासमती जो भी है आई डोंट नो ये मुझे माइंड में नहीं रही तो आप गए सब फिर लेके आए सब चीजें यू वेंट टू द बाजार एंड यू मार्केट एंड यू ब्रिंग ऑल दीस थिंग्स फ्रॉम द नाउ व्हाट यू डू now if I ask you at this moment of time if I ask you what is the taste of your pulao what is the taste of your biryani would you able to tell me would you able to tell me no very good. Now we will link all these things so let's start with Sajid Banda so you will not be able to you will not be able to tell me what the taste of pulao or what the taste of biryani is because now the things are in a not cooked form. So second, first part, all these are there. They have been brought from the market. First, this you do in your real way, in your this work. Second part, you do the cleaning. This is what dirty है. This is what वो लगा है, ब्लड लगा है या तो पनीर है थोड़ा सा ओपन स्पेस में था तो उसको क्लीन कर लो. तो कुछ आप वॉश कर रहे हैं, you're doing something, hot water कुछ अप्लाई लगा रहे हैं. राइस भी है तो आपको चेक कर रहे हैं कुछ टेबल्स को देंगे स्मॉल टेबल्स जो होते हैं तो वो दे आर नॉट देयर एंड यू क्लीनिंग ऑल दोस थिंग्स एंड मेकिंग द थिंग्स रेडी सेकंड पार्ट क्लीनिंग राइट थर्ड पार्ट व्हाट इज दैट you go for the now going for the cooking final pressure cooker or whatsoever oven or whatsoever you are using final cooking ठीक है last part last part finally the thing is there on the dining table ready with certain kind of napkins certain kind of other presentable items spoons knives forks plates uh, high quality crockery whatever it is सब आपके डाइनिंग टेबल पे है ठीक now it's ready to serve up you have started eating so if I ask you what's the taste of your dish now you will be able to tell me what's the taste now stop it now हो गया घर के एक्सरसाइज हो गया now come to your topic there are two things one is data other is information so when I ask you you have collected your data okay fine so let's take for example election period so election period you have gone and you have again we are making all these things which you have done your homework home exercise of kitchen let's take your that election scenario you have gone to the particular area let's take Lucknow constituency and you have gone there and you have got certain kind of data if I ask you why which party is having the higher rate
Say, when you brought paneer, when you brought chicken, when you brought butter, and I asked you, what is the taste of your pulao? What is the taste of your biryani? Because it was not good. So this is data. When you collect data from the market, you are not able to tell what the result is. Now try to link your real part with your kitchen part and with your voting scenario, election thing. So you will not be able to tell what your result is. Because data is all this is there. So all this thing is there. देखिए कहीं लिखा हुआ है रियल check data are the raw and the unorganized form of information first thing. So raw means result who which party is coming raw unorganized यहाँ पे एक्स पार्टी की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे वाई की है यहाँ वाई जेड मिक्स है यहाँ ए की बी की इंफॉर्मेशन है बी से जेड मिक्स है ये डेटा है दिस इज विच पार्टी व्हाट इज द टेस्ट ऑफ पुलाव व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बिरयानी सब रखा हुआ है डर्टी फॉर्म अभी तो क्लीन भी नहीं so this is data. Now, second part, what you do is you try to exactly remove the unnecessary data which you have collected. Because there may be many people who might be joking with you. Yeah, what you are doing? It's a PhD. कहाँ से? Integral से. Let's have a fun with that. Which party? अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी जी सर इंडिया में है अरे हाँ अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी लिखिए बेटा लिखिए अब आप लिखेंगे अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी लेकिन आप तो इंडिया में हैं तो रॉन्ग डेटा हो गया नहीं हो गया तो अलग साफ कर रहे हैं धो रहे हैं हाँ बताइए क्या करें हाँ हाँ so got the point so what you're doing cleaning dirty American Democratic Party in India what doing कोई है American Democratic Party in India so you're cleaning the things you clean your data सफाई हो रही सेकंड पार्ट आगे लिंक हो रहा है ठीक है थर्ड पार्ट what is there now you do as go back to your text we discuss text analysis now you analyze the things that means you're cooking the things that means your data is being furnished into some presentable form what is that presentable form that presentable form यहाँ पे है करेंगे information first line that presentable form is information so you are analyzing अच्छा क्या how many people have gone for a P party 1 2 3 4 5 6 let's say for example you have filled 50 questions right 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 15 for P party okay this 5 for C party 5 for 10 for this party so altogether adding 50 this becomes now if I ask you what is the weight of what is the flavor of your biryani or pulao or which is having the highest weight in forms of party आप कहोगे 15 16 18 this one 18 out of 50 this is 10 this is 5 this is 5 this is 5 so 18 this one and this one is your result so when you brought all those things in the form of data you will not you were not in the position to tell me which is having the highest weight or which is having the better taste or the poor taste. But later on, you are able to tell me which is having the better taste, poor taste, and which party is having the highest. And the better that you present, the better the smell of your food, the better the presentable of your food on the dining table, the better the result which is you are showing in the research, and the better it will be placed for the future reference work by the future research scholars in context of yours. That means they will be your future research scholars will be consulting your PhD.
presentable, dining table, presentable. Another point. So this is what we are talking in terms of the data and the information. When we talk of information, but actually it is used in a when we go for the common speaking part, it is used as synonyms, but it's not synonyms. क्या होता है वो कॉमन एक है हम लोग को बोलना है आप भी समझ रहे हैं सर समझ रहे हैं इन्फॉर्मेशन से बोल दिया डेटा आप भी समझ लो सर से तो वो लगता है synonyms वो चल भी रहा है synonyms but they have a greater difference if you talk in study. So, so this is what we are. And now let's see what books are saying. Books को देखते हैं तो अपना real देखा practical देखा. अब देखते हैं books what the books are saying. तो books का यानी plural form of the word data data का data जो plural form है data word का और जिसको कहते हैं give. मतलब भाई आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे अभी कल क्वेश्चन बना के लाएंगे तो आप क्वेश्चन पूछेंगे आप उन्हीं से पूछेंगे अपने पीपल से हाउ इज द RDC ऑफ दिस डिपार्टमेंट हाउ इज द RDC ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हाउ आर द मेंबर्स हाउ आर द टीचर्स हाउ इज द कोर्स वर्क आपको पूछेंगे तो वो आपको कुछ मिलेगा टू गिव तो आपको कुछ कोई देना है दैट इज कॉल्ड डेटा मीन्स और डेटा जो भी आते हैं यूजर से दैट मीन्स ठीक है अब नीचे आइए ये दिस वी हैव डिस्कस इट्स अ रॉ एंड द अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जो कि हम नहीं कलेक्ट कर पाते ठीक है अभी जो मुझसे पूछे कि भाई आपकी फाइल में क्या लिखा रखा है तो मैं बता सकता हूँ यहाँ भी ठीक है वो कुछ कमेटी और क्लब्स के कुछ पेपर्स हैं कुछ नोटिस के हैं कुछ सिलेबस हैं कुछ लेकिन आप कोई मुझसे पूछेगा लेकिन कहाँ रखा है कमेटी किस सीट ऑर्डर पर रखा है नोटिस किस सीट ऑर्डर पर रखे हैं सिलेबस किस वाला शायद पहला सिलेबस हो शायद ये डेटा ठीक है ना मैं आपको बताता फर्स्ट इज सिलेबस सेकंड इज नोटिस थर्ड इज कमिटीज एंड फोर्थ इज अटेंडेंस so data are the raw and unorganized form of the information data can be alphabets क्योंकि आप जिससे क्वेश्चन पूछेंगे अब हम इसे व्हाट इज दिस अल्फाबेट आप जो गौरव सर अल्फाबेट बताया नहीं आपने तो आप जैसा क्वेश्चन पूछेंगे जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि rate this rate this showpiece rate this showpiece 1 excellent 2 good 3 neither good nor bad 4 something else and 5 non-attack 5 नंबर आ गया 5 5 मतलब non-attack 1 मतलब 2 मतलब good आप जो भी पैरामीटर्स बनाए हैं तो डेटा चाहिए अब आप मुझसे पूछिए यस हाउ मेनी आर एक्सीलेंट लेकिन अब आप एनालिसिस के बाद पूछिए तो मैं बता दूंगा भाई 60% आर सेइंग दैट दिस 70% आर सेइंग दैट दिस शोपीस इज गुड 30% आर सेइंग एक्सीलेंट एंड 20% इज दिस इज दैट इज एनालिसिस after analyzing that is after cooking on pressure cooker cooking the item on pressure cooker is analysis very important now so data can be alphabets data can be alphabets numbers talked of symbols that represents ideas objects and conditions मतलब जो आप पूछ रहे हैं उसका इसी क्या आइडिया उसी का data information is more convenient to move of that means data is important. Data को लिख के चलना convenient है, not the other things. Next one. अब classification of data. अभी मैं आपको बता रहा था कहीं तो बता रहा था मुझसे थोड़ा सा आप मुझे रिकॉल कर दीजिए कहाँ बता रहा था मैं तो हाँ वो रिसर्च पेपर पब्लिशिंग जहाँ पे पब्लिशमेंट की बात हो रही थी वहाँ ना मैंने आपसे कहा था वी टॉक लेटर ऑन याद आ रहा है I said we'll talk later on. Now, there are two broad classifications. Primary data, secondary data. अभी हम talk कर रहे हैं. We are going to talk about primary data. वो आपको पता नहीं होगा शायद. और we'll be having the book language also. तो books में वहीं से दिया गया है. वहीं से आप पूरी स्लाइड करिए. पहले थोड़ा जनरल लेंगे. आपने
वो स्लाइड खोलने की जरूरत तो नहीं, प्रोसेस वाली याद है ना? प्रोसेस जो बने थे, प्रोसेस बने थे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे थे रिव्यू द लिटरेचर, तो मैंने आपसे क्या कहा था, दिस इज सेकेंडरी। अभी मैंने आपको क्या दिखाया, सेकेंडरी, ये सेकेंड वाला सेकेंडरी। ठीक है, फिर आइए यहाँ पे जब आप आएंगे, ये दिस पार्ट प्राइमरी, बट कंडीशन when you have gone for the primary study. अब आप raise hand, Gaurav sir, mine is not a primary study, mine is a secondary study. So when you are secondary, we will talking of all from the beginning till the end. We will be talking of secondary. From the review the literature till the analysis, we will be talking of secondary. But if you have gone for the primary, so here we go for this is this first part, primary. Okay. So now research paper publishment. When you publish a paper here, you talk of secondary. Secondary को you make the analysis. Okay? And when you come here, you have constructed a questionnaire. Tomorrow you will be coming with a questionnaire. So you have constructed a questionnaire. You have collected the data. Today we are discussing. Tomorrow questionnaire. And then next teacher Department of Mathematics will be coming for analyzing the data. What you have collected, I am analyzing. I am Department of Mathematics, I am analyzing. Next week, next Friday. And this is primary. So at this stage, you construct your primary research. Again, condition is there. No confusion, no confusion, no confusion. So this is we are talking of. Now, primary data, freshly collected data by the researcher for the first time. आप क्वेश्चनेयर बनाएंगे, कल आप क्वेश्चनेयर बना के लाएंगे, तो जब उसके बाद you will be going for the data collection, you will be having the fresh data. It is not published somewhere else. You are going to use it. You are going to use it. तो फ्रेश आपने बनाया ना, आप कल क्वेश्चन बना बताएंगे ना, you will be bringing the questionnaire tomorrow. After that, you will be collecting the data. After that, you will analyze the data. That means no one has worked on it. You are the first person you are working on. ठीक है, second raw, we have talked about what raw is. अभी तो डिस्कस हो गया सर. ठीक है, आपका वर्क है, शर्त है कॉपी ना हो, इट्स योर वर्क, तो इट विल वर्क. हाँ, अभी इंटरप्रिटेशन तो हुआ नहीं. विच पार्टी, व्हाट इज द टेस्ट, विदाउट इंटरप्रिटेशन. जैसे ही इंटरप्रिटेशन होगा तो सर एक्सीलेंट टेस्ट, सर पुअर टेस्ट, सर सॉल्ट ज़्यादा है. दैट इज इंटरप्रिटेशन. तो वो दैट इज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द प्राइमरी. अब सोर्सेज ऑफ प्राइमरी पार्ट हमेशा ये माना गया है. अब जब देख रहे बुक्स क्या कह रही है, या आपके क्या स्कॉलर्स ने या जो एकेडमिशियंस है वो क्या कह रहे हैं. Authoritative because the information has not been filtered or interpreted by a second party. ठीक है, अथॉरिटी मतलब वो यहाँ से, अथॉरिटी से मतलब आ गया क्योंकि पॉलिसी कौन बनाता है, अथॉरिटी बनाती है. तो आप जो डेटा लाए उससे पॉलिसी बनेगी, एग्जिस्टिंग पॉलिसी नहीं होगी. आप डेटा लेके आए, बहुत से लोग यहाँ पे अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि वो करेक्ट है कि नॉन करेक्ट है, मैं सिर्फ अपना टॉपिक बताना चाह रहा हूँ. लेट्स टेक जो टीचर्स यहाँ पे हैं, जो स्कॉलर पे सभी स्कॉलर यहाँ पे हैं, जो टीचर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है. लेट्स टेक ऐसा कुछ डिसाइड हुआ और हमें तो नहीं पता, हम तो आपने बताया. तो साहब ऐसा है कि यूनिवर्सिटी का टाइमिंग चेंज है, तो कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है. एग्जिस्टिंग पॉलिसी तो हमारा टाइमिंग क्या है, 9 to 4. तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी तो 9 to 4 की है ना. आप लेके आए टाइमिंग चेंज होना चाहिए. क्या टाइमिंग होना चाहिए मुझे नहीं पता, आई एम नॉट सेइंग, यू आर सेइंग. आप लेके आए,
है ना? तो आपने कहा सर 10 to 3, भाई क्यों 10 to 3? तो आपने कहा कि साहब दिस इज माई वर्क, this is my data and my question A, this is my data collection, this is the analysis, and on the basis of my analysis, the timing which is coming is 10 to 3. तो साहब आई एम नॉट सेइंग, वहाँ कह मत दीजिएगा, तुम्हारी भेजो के यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कमिंग दैट कमिंग इन पिक्चर। हाँ भाई क्या था? तो दिस इज देयर एंड सब लोग कह रहे हैं अच्छा ठीक है, मानिए यूनिवर्सिटी अथॉरिटी भी आपके साथ है। हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है, टाइमिंग चेंज 10 to 3, ओके फाइन। तो न्यू पॉलिसी, तो अभी तक पॉलिसी किसकी थी? 9 to 4। तो नई पॉलिसी बन गई, तो अथॉरिटेटिव आप क्या लेके आए? अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन लेके आए ना, ठीक। बट जो प्लानिंग इज गोइंग टू चेंज, प्लानिंग वही है, मैं समझा रहा हूँ ना। अब प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं प्राइमरी डेटा के? लेटर्स, आप तो जमाना खत्म हो गया फॉर्मल इनफॉर्मल, स्कूल डेज में तो पढ़ा होगा हम लोग, जब स्कूल में पढ़ते थे तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आज भी पढ़ते हैं बच्चे, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो वो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर होता है ना, याद है ना? टू द फला 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 फला, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय कॉलोनी इज, तो बच्चे लिखते थे माय कॉलोनी इज टू बी क्लीन बिकॉज दिस इज हैपनिंग, डेंगू मॉस्किटो इज कमिंग, सो इट शुड बी स्प्रेड बाय द डिपार्टमेंट, थैंक यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, तू मम्मा देगा, मम्मा बहुत याद आ रही, दिस इज आई वी आर रिमेंबरिंग यू, डैडी आई वी आर रिमेंबरिंग यू, एंड दिस एंड दैट, इनफॉर्मल। तो बच्चे पहली बार देखते हैं, मैंने तो लिखा नहीं, तो पहली सोच, तो वो सोच आपका, अब तो मतलब जो मेल से होती लेटर्स चलते हैं, आप ईमेल भेजते हो तो लेटर से भेजते हो, डियर सर, डियर रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट दिस इज टू बी डन बाय दिस इज ट्राई टू सबमिट इट एज सून एज पॉसिबल, थैंक यू, ये एक ही लेटर पहला है, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? इंटरव्यूज। हमारे ऑफिस में इंटरव्यू के पता नहीं कौन कैसा इंटरव्यूअर आ गया, इंटरव्यू ही आ गया, वीडियो ऑन द स्पॉट क्या चीजें इसके आगे क्या होता है? आप देखा पर्सन हु इज हैविंग 60%, he is being selected, and the person who is having 80% is still roaming on the road, क्या होता है? ट्रेंडिंग। उस इंटरव्यू में कौन क्लिक करिए? आप क्लिक करिए, आप अच्छे लग रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आप 60%, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये 90%, और वहीं हमको कह रहे हैं अभी 90% है सर, हम 90 सब सेलेक्टिव, वो 60 आप सेलेक्टेड, क्यों? क्योंकि प्राइमरी ऑन द स्पॉट क्या आप जवाब दे रहे हैं, क्या आप, इसीलिए कहते हैं इंटरव्यू प्रोसेस में बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि आप बहुत अच्छा पढ़े, वेरी गुड थे, न्यूज़ में आती है, लेकिन कभी कभी ऑन द स्पॉट कैसे क्लिक करें, दैट इज, तो इंटरव्यू सेशंस हो गए, आपके स्पीचेस हो गई, कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, नई नई चीज़ें स्पीचेस में मिलती है, हम लोग उसको लिख लेते हैं, जैसे आप नेक्स्ट बार इसको बोलेंगे, बताएंगे, दिस इज एक्सपीरियंस। ये आपको क्या लगता है भाई, ये प्रेशर और एक्सपीरियंस में अंतर क्या है? प्रेशर भी कैपेबल है, एक्सपीरियंस दोनों ही कैपेबल है, एक्सपीरियंस भी कैपेबल है, फर्क सिर्फ इतना होता है भाई, आपके आपके पापा आपसे क्या कहते हैं, आपकी मम्मा आपसे क्या कहते हैं, बेटा ये बाल ऐसी नहीं सके, लैंग्वेज है, पेरेंट्स लैंग्वेज, दैट दे यूज्ड टू से, बेटा आप जो पढ़ रहे हो उसमें हम भी थे, लेकिन धीरे धीरे आज आपसे बात की कुछ महीना, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैंने किया आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को मैं नहीं पूछूंगा, इस क्वेश्चन को आंसर को मैं डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ, फिर कोई और आया, उसने फिर कोई बच्चा हाथ होता, उसने मुझे दिया, बढ़िया मैं आगे देता हूँ, अब उससे नेक्स्ट टाइम मैं चलूंगा, तो उन दोनों क्वेश्चन को, वो सब लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर था, और जो लास्ट ईयर दो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन से आपने कितनी डिस्कस किया, तो मेरा तो इंप्रूव हो गया ना, राइट? तो ये स्पीचेस से हमें प्राइमरी होती है और इनसे हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं एंड हमें यूज में लाना चाहिए, नहीं लाते आपको जैसा डे अच्छा लगता है, ये स्टाइल जो भी स्टाइल आपका है, बट ये स्पीच जो है वो आपका प्राइमरी होता है। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो एडिटिंग जो डिस्कस हो गया, मतलब मालूम ही है आपको, लॉस रेगुलेशन जो बनते पहली बार एग्जिस्टिंग बातें होती, फिर आप कंफ्यूज कर जाए, पहली बात है वो, उसके बाद के इंटरप्रिटेशन होते हैं उसमें, वुमेन पे लॉ बना, मेन पे लॉ बना, जनरल कैटेगरी पे लॉ बना, किसी उस पे लॉ बना, जो भी हो,
वो पहली बार बना उस पर इफेक्टिवनेस नॉट इफेक्टिवनेस, तो वो सारी चीज डिस्कस होती है आपकी पार्लियामेंट हाउस में, बोलना होता है कोई लॉ इस तरह बनता है। वो आपके सेशन उसमें चलते हैं, क्या लोग क्या सेशन जो होते हैं आपके राज्यसभा सेशन और लोकसभा सेशन क्या कहाँ चलते हैं वो सब, वहाँ डिस्कस होता है, फिर अल्टीमेटली वो फाइनल बनता है। इतने उसके फिर आप पे छोड़ दिया जाता है, आप लोग भी लेके आएंगे, आप लोग को गूगल दिए जाते हैं, वो लिंक भेजे जाते हैं, आप अपना व्यूज पे भरे यस और नो और जो भी है नेगेटिव पॉजिटिव जो भी करके, फिर वो व्यू आपके दिए जाते हैं और फिर सब चीजें पे डिस्कशन होता है, फिर सारी चीजें बनके तब कहीं होगा ताकि एग्जैक्टली जो बना है वो करा लिए, उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो हो रहा है। तो लॉज रेगुलेशंस कोर्ट डिसीजंस जो भी आता है हमेशा क्यों होता है, आप क्यों देखते हैं ऐसा, हमेशा आप देखते हो कि एडवोकेट जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई अपने सीनियर से कहते हैं सर वो पुरानी फाइल समझ सकते हैं सर इस केस से लेके कुछ और, हाँ हमारे वहां समझ ले लीजिए, क्यों फॉर द रेफरेंस, बिकॉज वो भी उस टाइम फर्स्ट टाइम रही होगी। अब जो आप बनाओगे, जो आप ये बना रहे हो ये सेकेंडरी है, लेकिन जो आप बना के प्रेजेंट करोगे वो प्राइमरी बन जाएगा जब आप पहली बार लेते हो। ठीक है, तो कोर्ट डिसीजंस, गवर्नमेंट डेटा, सेंसस, इकोनॉमिक, पहली बार ही पता कितने लोग की डेथ हो गई, कितने लोग की मर गए, नया बनता है ना, सॉरी कितने लोग की डेथ हो गई, कितने लोग की बर्थ हुआ, ये सब पहले बनता है। फिर उसके बाद 2022 पास 2024 23 चलिए 2023 प्रेजेंट हो गया, ये जो प्रेजेंट डेटा आएगा ये प्राइमरी हो गया, जैसे 24 आएगा ये प्राइमरी वाला सेकेंडरी बन जाएगा। 2023 हम 24 में आ गए, हम 25 में आ गए, आज 25 है मानिए जैसे आज 2025 और मेरे पास डेटा 2024 का है, 2025 का डेटा वो देख लीजिए आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट तो ये सब हो गया डिस्कस इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन, हाँ ये देखिए बताइए आप, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द अबव विल बिकम सेकेंडरी सूनर और लेटर, जो आज प्राइमरी है दैट विल बिकम सेकेंडरी लेटर ऑन, ये तो बताया। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, तो पहले सेकेंडरी कर लेंगे और उसके बाद फिर प्राइमरी कर लेंगे। Secondary data are those data which are collected for some other research work and then used in study which the researcher has completed. हाँ, okay, understood. You understood? Could you know straight out? Yes. Sources. Sources of secondary data क्या हैं? Books, magazines, right? Some articles which are published in the newspapers. Your Google work which you do. Google पे आप ढूंढते हैं, साइट्स पे आप ढूंढते हैं, ये सब सेकेंडरी। ठीक, देखिए secondary sources are the interpretation of secondary sources are the interpretation of the primary data. Sorry, actually audible हूँ मैं actually बोलते बोलते audible हूँ, am I audible? Secondary sources can be encyclopedias, textbooks, handbooks, magazines, newspapers, articles और ये सब चीजें आती हैं, ये sources of secondary data है। ठीक है, अब आया इसकी क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, दो तरह के क्लासिफिकेशन इसके बनते हैं जो बुक्स में लिखी है। अब आपके डिपार्टमेंट में कितना इस्तेमाल हो रहा है वो आपको जो है चेक इट आउट, राइट। वैसे बुक्स में आपको जो मिलेगा कोठारी साहब की किताब में देखिएगा या आप भट्टाचार्य साहब की किताब में देखिएगा तो आपको ये मिलेगा दो क्लासिफिकेशन, इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा। ठीक है, इंटरनल डेटा में क्या होता है, मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब आप जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट रखा है, लाइब्रेरी में रखा है, आप कंसल्ट करना चाहते हैं, मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी डिपार्टमेंट, आप मैकेनिकल करना चाहते हैं, आप सिविल करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट का, हम लोग का यहाँ से मैनेजमेंट मतलब वो मतलब नहीं है हमारा मैनेजमेंट, यहाँ से मैनेजमेंट होता है किसी भी डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अंडरस्टूड, एनुअल रिपोर्ट्स जो एक साल में बनती है, बैलेंस शीट तो फाइनेंस की बात होगी, हम लोग की कैटेगरी में आते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आजकल तो बहुत इफेक्टिव हो गया है एमआईएस, आप लोग देखते हैं चीज़ें, सारी चीज़ें सब चीज़ें उसमें चली गई, ऑनलाइन चली गई। आप क्या होता है ना, जैसे पहले क्या होता था इफ यू गो फॉर द पास्ट तो उसमें अलमीराज होती थी, उसमें 2022 2020 2018 2019 2020 2021 2022 रैक्स बने रहते थे, उसमें ये 2018 की इंफॉर्मेशन है फाइल से,
ये 2019 की फाइल्स है, ये 2020 की फाइल्स है, ये 2021, 22, 23 चल रहा है। ठीक है, अब ये सब चीजें अब सब ये फोल्डर्स बन गए हैं। फोल्डर 2019 का कंप्यूटर में फोल्डर बनाया था, फोल्डर देखते थे येलो कलर का फोल्डर फोल्डर बना है, उसमें उसमें फाइल्स रखी हुई है। ये 2018 का फोल्डर, ये 2019 का फोल्डर, ये 2000 वही चीज कन्वर्ट हो गई। अब ये एक्सटर्नल डेटा, अभी तक आपने देखा इंटरनल डेटा, अपना एक्सटर्नल डेटा, मतलब ऐसे समझ लीजिए, डोंट गेट कंफ्यूज। इंटरनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल इंटरनल when we talk of papers in terms of within the organization, internal, within the organization, internal, apart from the organization, external. Okay? Now next one, गवर्नमेंट सोर्सेज, गवर्नमेंट की जो भी आती है पॉलिसीज आती है उनको फॉलो करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट की चीज़ें आती हैं वो एक्सटर्नल डेटा बनता है आपके लिए। कमर्शियल सोर्सेज जो ये आपके जो क्या कहते हैं जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके पास इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है, या जो बिजनेस पर्पज, ऐसे नहीं कॉम्पिटिटर बिजनेस पर्पज जो इन्फॉर्मेशन, इंडस्ट्री मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ऐसे लीजिए वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है, इंडस्ट्री मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन। आप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सीमेंट की इन्फॉर्मेशन, सीमेंट इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, दैट दिया था। और मिसलेनियस सब अदर सब कुछ मिला लीजिए, तो ये सब मिलकर आपका एक्सटर्नल डेटा बनता है। ये है आपका अब शुरू हो रहा है आपका जो कल काम होगा हमारा, आपका देखिए कहीं पे बना हुआ है, देखिए दिस इज इट। तो दिस इज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ, ये डिटेल्ड है, ये थोड़ा डिटेल्ड होने वाला है क्योंकि हियर वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ योर आज फ्राइडे भी है। So this is exactly we are going to talk in terms of collection of the primary data, and which is the detailed part, because अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो already existing part को डिस्कस कर रहे थे, the things which are already there in the existence and we are trying to have the collection of it, study of it, ठीक है, and we are using it in our work। अब आ रहा है आपने जो वर्क बनाएंगे, तो आप जो वर्क बनाएंगे कैसे बनाएंगे, तो कल का होमवर्क आपका मिल गया, हम देखेंगे कैसे बनाएंगे। और जो चीज़ें आपको मिलने वाली है ये सारे मेथड्स हैं आपको मिलने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनेयर मेथड, शेड्यूल मेथड, some other methods like warranty cards, people panel, mechanical device, projective techniques, pictorial techniques, play techniques, ये सारे दिस इज नॉट माइंड ये मत सोचिएगा, दिस इज फ्रॉम बुक ओनली। अगेन आपको एक 28 साल की मिलेगी, बट 28 साल के साथ आप देखेंगे तो आपको मिलेगी, नो इशू। ठीक है, ये सारी चीजें है प्राइवेट। अब इसको हमें देखना है वन बाय वन, तो हमारे सामने एक पिक्चर आ रही है सामने, ये सारी चीजें हैं प्राइवेट के मतलब ये आप बनाएंगे रियल में, ये फैब्रिकेटेड नहीं है, दिस इज नॉट थ्योरी, थ्योरी है आपके उसके लिए क्या कहते हैं पास होने के लिए कोर्स वर्क, और द कोर्स वर्क इट इज देयर, but it is there for your PhD work also when you do put in the real way। real way में हम कैसे कम काम करेंगे वो भी है। तो स्टार्टिंग विद द पार्ट देखें कहाँ पे है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है। हाँ, सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ प्राइमरी डेटा। ना ऑब्जर्वेशन पार्ट आप ऐसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा जनरल में जैसे जनरल में हम सब ने वी ऑल हैव गिवन द एग्जामिनेशन, कभी ना कभी अपनी लाइफ में हमने एग्जामिनेशन दिए हैं, चाहे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वी हैव गॉन फॉर, और स्कूल एग्जामिनेशन वी हैव गॉन फॉर, और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन वी हैव गॉन फॉर, वी ऑल हैव गिवन द एग्जामिनेशन। तो आपको देखा होगा व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशन, व्हेन यू आर गिविंग योर पेपर एज द स्टूडेंट और स्कॉलर और इन्विजिलेटर, the department or the organization who is conducting the exam, one of the representative, he is coming within the room and he's saying like this, what is the man? He's seeing everyone's faces. He's seeing your faces. He's not mad. Actually, he's a person appointed by that organization who is conducting the exam as observer. And some heavy amount is being given per day for watching this thing. Finish. Okay. For this
5 seconds, 10 seconds work is being paid for the day, and is no other work. Just to see, observe. So what he is doing, what he is doing, that you have to in your PhD for collecting the data, primarily, not secondary. ऑब्जर्वेशन लेट्स से फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप क्या होता है जनरली आप जब किसी मेडिसिन को या फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट या फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट या बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट जनरली क्या होता है कि जब आप किसी मेडिसिन को टेस्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं पहले आप मेडिसिन को जो स्पेसिमेन जैसे आजकल जो स्पेसिमेन यूज में आजकल जो स्पेसिमेन जनरली यूज में आते हैं वो रैट ऐसे स्पेसिमेन यूज में आते हैं जो हमारे ज़्यादा उसमें है जिनका लॉस नहीं होता जो अलाउड है यूजली तो आप क्या पहले ऐसे देखते रैट एक केस में होता है रैट एग्जैक्ट इन द केस तो आपको देखते क्या कर रहे हैं रैट का कलर देख लेंगे रैट का साइज देख लेंगे आप रैट का बिहेवियर देख रहे हैं वो अटेंडेंस हो गई आपकी कंप्लीट है पूरी एनिमल एनिमल लेट हो गया तो जस्ट मार देते हैं लेटर और आफ्टर द सेशन तो क्या व्हाट यू डूइंग यू हैवंट सीन अ रैट बिफोर इन योर लाइफ आपकी कभी हाउस में रैट नहीं देखते हैं आप पहली बार के देख रहे रैट रैट नहीं आप देख रहे हाउ दैट पर्टिकुलर एनिमल इज मूविंग इन द केज जो भी है आपका आपको नोट डाउन लगा उसके बाद that animal or that specimen is injected with some medicine, some new medicine, which the company has to launch. फिर उसके बाद टाइम देते हैं आपको सब 30 मिनट्स का टाइम दीजिए कि द मेडिसिन शुड गेट इन इट्स ऑपरेशनल फॉर्म इंजेक्शन है तो 10 मिनट में दीजिए मेडिसिन है तो 30 मिनट जो भी और वो सब डॉक्टर्स बताएंगे और आप लोग बताएंगे कि बायोलॉजिकल रिसर्च फॉलो से हमको किसी और जो जितना पता था टाइम देंगे आपने वो टाइम दे दिए उसके बाद फिर आप दोबारा आए और फिर आपने you are watching the specimen. What you are watching? Again, you are watching the behavior of the specimen after the medicine, after the injection. So this is the data which you are, and this is that. And what type of observation that you have to see? I am not biological person. So that you have to see what data you are collecting, and what observation you are doing, what questions, answers you are getting. That is your biological or pharmaceutical or whatever. Whatever part is in that I am explaining. That is okay. Before the medicine, till injection, after. So that is what we are talking here in this particular category. That is what I said. अब हमारे यहाँ थोड़ा सा ले लें हमने अपने में भी तो मुझे ले लेंगे आई एम ऑल्सो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट अपना मैंने एग्जाम्पल ले लिया हमारे यहाँ क्या होता है वैसे फॉर अब ये सबके साथ है फॉर एवरीवन हम और आप कभी ना कभी वी गो फॉर शॉपिंग ऐसा हो नहीं सकता कोई एक आदमी होगी कहते हम शॉपिंग में नहीं गए हो ही नहीं सकता एक आदमी करे तो हम लोग जब हम अभी हमारा आगे मैनेजमेंट बात कॉमर्स का तो हम लोग जब शॉपिंग में चलते हैं तो क्या होता है आप कभी भी देखते हैं वहाँ पे ऐसे कैमरा लगा ऐसे नहीं लगा मतलब उसके नहीं लगाते आप अटेंटिव बोले वो कैमरा लगा आप कंपनी में लगे आप ले रहे हैं आप आए शॉप पे आए एसी लगा हुआ है सब कुछ कैमरा लगा हुआ है बढ़िया एम्बियंस है पूरा गुड एम्बियंस है तो होता क्या है एक्चुअली रिटेलर जो होता है शोरूम का या जो भी पर्टिकुलर शॉप का वो इतना एक्यूरेटली आपको स्टडी नहीं करता अगर हमसे शाम को पूछे तो कितने लोग आए वो चले कस्टमर को डील करें और एक कस्टमर आ रहा है मनी सेकंड कस्टमर थर्ड कस्टमर तो सबका वो लोग करते रहे एक बहुत डिफिकल्ट हो गया एक डिवाइस हम आगे देखिए We are doing observation through device. अभी तक तो हम अपने आई से ऑब्जर्वर टू आईज अब आजकल तो वैसे कैमराज भी अटैच हो गए इवन एग्जामिनेशन में भी कैमराज अटैच रहते हैं तो ऑब्जर्वर्स का रोल मतलब हो सकता है शायद कैमरा थ्रू चला गया ऑब्जर्वर भी आते हो और वो सब तो देखने वाली बात है जैसे हम तो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं सो कैमरा इज इंस्टॉल तो आप होता क्या हम लोग क्या अब किसी कंपनी ने is doing certain kind of research, ठीक है? या कोई रिसर्च पीएचडी स्कॉलर है, he is doing certain kind of research. तो उसने अपने शोरूम की पर्सन से बात की भाई ऐसा है कि प्लीज मुझे परमिशन देंगे मैं दिन भर तो आई एम नॉट एबल टू स्टैंड बिकॉज आई हैव टू गो टू डिफरेंट शॉप्स
तो अगर आप परमिशन देते फॉर अ डे या फॉर 7 डेज, जो चार्जेस हैं आप यूजली टेक योर चार्जेस, और मैं कैमरा अपने यहाँ लगा देता हूँ। बस कुछ नहीं है, आप चेक कर लो, चाहो तो हमारा कह लो ये डिवाइस है, ये वायर है और ये स्विच है, आपके लिए वायर अटैच कर दूँगा आपकी स्विच को, या आप कहीं अपना स्विच लगा दिए और ये सब आप चेक कर लो और यहाँ इंस्टॉल रहेगा। अब मैं शाम को रात में आऊँगा, आप कितने बजे क्लोज करते हैं, भाई मैं रात में 10 बजे क्लोज करता हूँ, मैं सर 9-9:30 पे आऊँगा और अपने स्विच वाले में फिर 7 डेज मुझे लगा जाऊँगा और ऑन ऑफ 7 डेज आपके साथ, अगर आप परमिशन देते। So you are doing research for some हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे you are doing research for some company or for some department or for some study. So अब आप research करें, what you do? आप गए, आपने इंस्टॉल लगा दिया। So अब पर्सनली से हमारी डेली हमारे आइटम्स होते हैं, FMCG नाम सुना होगा आपने, हमारे FMCG बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं रोज मर्रा के सामान। अब समझ में आ गया। तो व्हाट आर रोज रोजमर्रा के, आप लोग ज़्यादा से जानते हैं, नहीं जानते हैं। रोजमर्रा के सामान क्या है? तो शैम्पू, पाउडर्स, और क्या है, और भी जो चीज़ें यूज में आती हैं आपके, आजकल सेंट्स भी आ गए हैं, डिओड्रेंट्स भी आ गए, ग्लॉसरी आइटम्स ये सब। तो अब ये सब रखें सब, मेरा कैमरा लगा हुआ ना, अब एक शॉपकीपर आया, एक शॉपकीपर ने परमिशन दे दी, अब एक आया कस्टमर तो देखो। He's talking something with the अपने जो कंपेयरिंग जो भी है डिवाइस के साथ, हस्बैंड के साथ, मदर के साथ, फादर के साथ, जो बाद में हाँ, देखिए दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बेटा अच्छा भैया थैंक यू, बस आपको कुछ बस देखना था, अच्छा लगा, अरे अरे आप देखिए आप ही क्यों लगाया शॉप दुकानदार का कुछ खरीदा नहीं। अब हम शाम को गए, हमने देखा अच्छा अच्छा, ऐसे एक तो हुआ, कई बार हुआ, अभी तो एक एग्जाम्पल है, हमने देखा, मैंने अच्छा जरा इसको वो जूम करिए, जूम किया। अब हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं, जूम किया तो कौन सा प्रोडक्ट है, सर वो हम किसी का नाम है एक्स वाई जेड, हमने एक्स वाई जेड प्रोडक्ट जिनको पसंद नहीं है, अभी कौन सा प्रोडक्ट, ये सर FGH, खरीदा नहीं, इसका मतलब खरीदना चाह रहे थे, खरीद पसंद आ गया, इसका मतलब FGH इज बेटर देन एक्स। अब देखो कितनी बार ऐसा रिपीट हो रहा है, तो फिर डेटा कुछ हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये दो के थ्रू होता है, आइदर थ्रू आइस और थ्रू डिवाइस। डिवाइस मैंने बता दिया कि मेटेरियल अभी लिखा है, तो आगे भी पढ़ लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, कल डिस्कस होगा या अभी आज डिस्कस होगा। तो ऑब्जर्वेशन गो थ्रू टू पार्ट्स, थ्रू आइस और थ्रू मेटेरियल। अब आजकल क्या होता है, आप देखते हैं कभी आपने देखा है, अ, पहले क्या होता था हमारे ट्रैफिक सिस्टम में, हम आई एम नॉट प्रेजिंग एनी पर्सन, आई एम नॉट प्रेजिंग एनी गवर्नमेंट, मैं सिर्फ बता, पहले क्या होता था अपनी स्टडी, पहले क्या होता था, आप ट्रैफिक पार होता था तो हेलमेट लगाए हैं, यू आर अटैच, यू आर हैविंग अ हेलमेट, यू आर नॉट हैविंग हेलमेट, और वो बेचारा पेशेंट डॉक्टर वाला हेलमेट नहीं लगाया आपने, भगाई गाड़ी एंड यू आर ऑफ, और बेचारा दौड़ रहा है, ही इज नॉट एबल टू कैच। अब क्या होता है, वो आया हेलमेट नहीं लगाया, एक सेकंड ऐसे करेगा आपके सामने, बस आप आ गए सीधे स्टॉल और पहुंच गया, और आपके सम्मान आपके घर पे, पता भी नहीं चलता, कभी तो पता भी नहीं चलता, बिल्कुल सही बात। और कैमरा लगे, और क्या करते हैं, अब मैं देखा वही बात देखा मैंने, जेंटलमैन वो लाइन है, वो जैसे ही देखा कैमरे पे आ गए तो गाड़ी को बैक करते हैं, वो क्या करते हैं, पीछे नहीं, पीछे पीछे नहीं, कहाँ पीछे, पुलिसमैन तो है नहीं, वो पुलिसमैन लगा हुआ है, वो तुरंत थोड़े पीछे लाइन के क्रॉस, तुरंत घर में आपके सामने 500 रुपये 1000 रुपये का, तो भैया 500 और 1000 रुपये का 10 बार आ गया तो फिर कहीं धाउ तो बैक 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 बैक, लाइन पीछे गाड़ी खड़ी, बाइक खड़ी है, स्कूटी खड़ी है, जो भी हो गया तो दिस इज वी ट्रैफिक ऑब्जर्वेशन। इसी तरह आप भी ऑब्जर्व ऐसे डेटा कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्व। अब देखिए मेरी बुक्स में क्या लिखा है, इन टॉपिक में अपना रियल से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने अपना, आपको भी कोई एक्सपीरियंस तो प्लीज शेयर करिए, मैं तो अपने ही बता रहा हूँ, आपको भी बताया, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो आप बुक्स को देखें, फिर आगे आपको एक्सपीरियंस लेते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या है, डिस्कस हो गया आपके साथ,
ठीक है। और ऑब्जर्वेशन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि द पर्सन इज नॉट कम्युनिकेबल। जैसे मैंने यू आर वेरी मच कम्युनिकेबल इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। आई एम नॉट वेरी मच कम्युनिकेबल इन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अब यू विल आस्क मी क्वेश्चन इन English language only, but I cannot reply you in English language because I'm not an expert of that, right? So what is it? Observation method. Not able to communicate, do it later. I will observe your behavior and I will communicate it. So this is good. अब हम लोग देखें तो क्या है, इसी तरह की चीजें वही से दिया है तो इसी तरह की चीजें बायस एडवांटेजेस क्या है। बायस इज एलिमिनेटेड इफ ऑब्जर्वेशन इज डन एक्यूरेटली। बायस मतलब कि कोई फॉल्ट, जैसे मानिए प्लास्टिक फॉल्ट, हाँ ये क्या चीज़ है, बायस क्या चीज़ है। अभी आपने मैंने आपसे कहा ना कि कोई आदमी मिल गया, विच पार्टी यू आर वोटिंग, अमेरिकन डेमोक्रेटिक, अभी एक्सप्लेन कीजिए अमेरिकन डेमोक्रेटिक भैया इंडिया में है, आपकी वजह कर रहे हैं। अरे बेटे जवाब दे देंगे सॉरी आई नॉट ये बता सर फिनिश हो गया, मैं बात करूंगा दूसरे में चला जाऊंगा, आपकी मैं समझा कर वे प्लीज प्ले यू। तो अगर जिस बच्चे को नहीं पता होगा, ऐसा उसने प्ले किया, ऐसा जवाब दिया जो कि आपके आंसर से मैच हो रहा है, तो प्ले कर रहा है, आपने तो आंसर ठीक कर दिया, आप आगे बढ़ गए, रॉन्ग हो गया आगे चलते, रिजल्ट आपका अनअप्रोप्रिएट आएगा आगे चलते। लेकिन जब बिहेवियर आता है तो आप देख लेते हैं कि वो जो आया और ये सीरियस है, ये जो बायस है ये एलिमिनेट होता है। अभी ये सब आया। सेकंड क्या चीज, इन्फॉर्मेशन ऑफ करंट हैपनिंग नॉट ऑफ पास्ट और फ्यूचर। मतलब आप जो सामने देख रहे हैं वो आपको दिख रहा है, पास्ट आपको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सब मैकेनिकली ना। इंडिपेंडेंट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट। हाँ आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, मतलब हमारा कैमरा लगा हुआ है, हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, भाई हमें नहीं आपका क्वेश्चन नहीं भरना, हमारा टाइम नहीं है, बस क्वेश्चन है, आई एम वाचिंग। नेक्स्ट, when respondents are not capable to give वर्ड, बता दिया मैंने आपको, वर्बल वही कम्युनिकेशन है, ठीक। नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या है कि भाई अभी आपने कहा ऑब्जर्वर को आप रखोगे तो कुछ सैलरी दे रहे हो, आप कुछ पर डे कुछ दे रहे हो, तो एक्सपेंस आ रहा है ना, समथिंग इज बीइंग यूज्ड एज एन इनपुट, तो आपको रिसर्च स्कॉलर कैसे लगाएंगे, है ना। तो कुछ एक्सपेंसिव कुछ कैमरा वैमरा लगा, अब आजकल तो सस्ते हो गए कैमरा, मोबाइल पे आ गए कैमरा, आप यहाँ ऐसे रख लीजिए, क्या आप लोग रखते हैं ऐसे करके और कैमरा ऑन कर दीजिए तो सब वॉच हो रहे हैं, ऐसा कुछ करते हैं आप लोग आसान करेंगे। मुझे नहीं पता, आप लोग ज़्यादा बेटर बनते हैं, ऐसे ऑन कर दिया पता ही नहीं ऑन है, आपको लग रहा है कि तो मोबाइल रखा, मोबाइल नहीं ऑन है, तो सस्ता हो गया सर। लेकिन पहले तो कैमरा, अब हमारे कैमरा इंस्टॉल करना पड़े तो एक्सपेंसिव है। मैंने अभी पूछा ना एक बार ऐसे ही आजकल उसमें, हाँ हाँ ये हमारे पेन में नहीं है आपको, लेकिन आज का ट्रेंड में है, बहुत सही कह रहा है, 3000 का आता है, 5000 का 3000 का, हाँ हाँ वैसे लगा लेते हैं, तो पता ही नहीं चलता आपको। वैसे ऐसे एक और कुछ चीज रख देंगे आप लोग, पेपर रखोगे आजकल बहुत, अब आजकल देखते नहीं आप लोग बड़े बड़े मिनिस्टर्स वो जैसे देखते हैं कि वो जर्नलिस्ट आ रहे हैं, जवाब तो देती है, बोलते नहीं हो, अरे सर हमने आपसे 30 क्वेश्चन पूछा है, क्यों पता नहीं कहाँ क्या। अब बड़ा सिस्टम देखिए, मैं अब भी आप आगे सर आप प्रेसिडेंट तक किसी में मैं पास गवर्नमेंट से मतलब प्रेसिडेंट गवर्नमेंट से मैं सिर्फ टॉपिक होता है, देखिए कितनी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, कितनी चीज़ें कंट्रोल में आ रही है, कितना करप्शन इन चीज़ों से कम हो गया। हम लोग डरते हैं, आप देखिए अपनी फाइल लेके चलिए, बहुत ही रेयर केस होगा तो वो कहेगा, हो सकता है शराब का पानी बन जाएगा, बाय गॉड ग्रेस तो आपकी फाइल नहीं होगी कम। तो दिस इज दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये है ऑब्जर्वेशन मेथड, क्या तो एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, नॉट वेरी मच, आपको रिड्यूस हो गया। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस मेथड वेरी लिमिटेड, हाँ थोड़ा सा डिटेल नहीं हो सकते। अब आप लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, गहरी बात करनी है, इंडिया है तो वो डिटेल कहाँ होगा, वो तो बस बता देगा कि हाँ भाई ये आदमी सही बता रहा है, झूठ बोल रहा है, करेक्ट नॉट करेक्ट, प्ले कर रहा है नॉट सीरियस, बस डिटेल कहाँ। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड्स क्या होते हैं जो बुक्स में, जी एनी क्वेश्चन मैम, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। लेट तो नहीं हो रहे आप लोग, आज फ्राइडे भी है, मैं आगे बढ़ता रहूँ कि अच्छा इसको कंप्लीट कर लो बाकी नेक्स्ट सेट रखें, ऐसा कर लो, इसको ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर लो, है ना, फिर नेक्स्ट सेट रखें, अटेंडेंस आपकी होगी, चलो ठीक है।
ये देखिए वेरी शॉर्ट, हाँ हाँ, आप सही कर दीजिए। अब देखिए बहुत सिंपल सा, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, नॉन बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। किसी एनिमल का स्पेसिमेन का बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, तो ये देखिए हमने यहाँ पे ह्यूमन बींग एनिमल भी ले लिया हम, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मैंने एक्चुअली अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से बनाया था। तो अब यहाँ पे बिहेवियर का ह्यूमन बींग का डिबेट है। तो ह्यूमन बींग का बिहेवियर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉन वर्बल एनालिसिस। ठीक है, जब वो बोले ना, बोल गया तो फिर वो some other interview method है। When the person is speaking, what is your name? What is your name? What is your name? Right? तो ये कम्युनिकेशन हो गया, तो इंटरव्यू हो गया। तो ऑब्जर्वेशन तो नॉन वर्बल है, बोलना नहीं है, देखना है, जस्ट यूर वॉच। ठीक है, उसके बाद ऐसे लिंग्विस्टिक मतलब कभी आपने देखा है क्या लिंग्विस्टिक, जैसे हाँ, जैसे मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ही को ले लीजिए, हम आपको पापा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो व्हाट इज देयर, जैसे आ रहा है ये मेरा, this is my own what is called as body which is responding to my speech towards you। तो ये एक बिहेवियर आपको स्टडी करना है। गौरव सर, गौरव सर, when you use a sentence, when you say the sentence, आप पढ़ रहे हो ना, आप स्टडी लगा रहे हो, तो ये बिहेवियर स्टडी। उसके बाद जैसे आता है एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक, माय वोकल, मैं फेमिनाइन वॉइस है मेरी या हार्ड वॉइस है मेरी, या कैसी पिच है, आप उसके थ्रू, या मैं आपको लग रहा होगा आई एम स्कोल्डिंग यू, तो गौरव से डांट रहा है, बहुत गुस्से में है, तो मैं क्या गौरव से ने कहा मैं गुस्से में हूँ, या मैम ने कहा कि मैं गुस्से में हूँ, नहीं, मैंने पूछा नहीं आज कुछ है, म्यूजिक स्कॉलर है लेकिन डोंट डिस्टर्ब, आज कुछ पैनिक नहीं है। मैंने सिर्फ देखा रहा होता है इनके बोलने की स्टाइल, ये कुछ कह रहे थे इनके, उसके साथ इसको जो जो वोकल होता है उसको उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक। स्पेशल मतलब हमारा आपका, ये मेरा आपका डिस्टेंस कितना है, मेरे ख्याल से हम समझ अबाउट 20 फीट, 1-2 फीट प्लस माइनस, 3-4 फीट प्लस माइनस। तो ये क्या एक फादर मदर का रिलेशनशिप शो कर रहा है, मैं फादर हूँ, आप मेरे डॉटर है, सन है, क्या ये फ्रेंड का रिलेशनशिप शो कर रहा है, मैं आपके साथ फ्रेंडली हूँ, ये रिलेशनशिप एक फॉर्मल शो कर रहा है, जहाँ पे मैं एज ए टीचर स्पीकिंग। लेकिन अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ह्यूमन बीइंग है, और मैं ऐसे आई हूँ, बेटा क्या कर रहे हो, क्या किया, व्हाट इज दिस, आई एम नाउ एज ए फादर और एज अ मदर स्पीकिंग टू माई चाइल्ड, ये क्या था, क्या किया। तो क्या मेरी आपकी दूरी, पर्सन स्टैंडिंग देयर, ठीक है, इफ ही इज वाचिंग मी एंड यू, तो क्या कहेगा, दिस इज द फादर हु इज स्पीकिंग टू द डॉटर एंड द सन्स, कहेगा, कहेगा, अच्छा कहेगा, नहीं कहेगा, दिस इज द फादर स्पीकिंग टू द सन्स और डॉटर, नो। अगर मैं वहां आ जाऊंगा, यस, वहां आके मैं बोलूंगा, यस आई एम एक्टिंग द फादर स्पीकिंग टू माय सन, तो वहां खड़ा होकर यस इज द फादर स्पीकिंग टू हिज सन, यहाँ होगा तो ये केस की स्टडी है। क्या मैंने कुछ बोला कि मैं इनका फादर हूँ, मैं आपका फादर हूँ, मैंने बोला उससे, बट उसने देख लिया अच्छा ये इनके फादर है, लग रहे हैं ये उनके टीचर है। दिस इज स्पेशल स्टडी, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमाइसिस, टर्म आता है प्रॉक्सिमाइसिस का टर्म दिया गया है। नेक्स्ट, अब नॉन बिहेवियर स्टडी क्या है, आप क्या, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड्स बता रहा था, आप क्या रिकॉर्ड्स की का जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो आई विल एबल टू अंडरस्टैंड आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। कभी आपने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा नैक के इंस्पेक्शन होते हैं, वो क्या करती है, कई बार कहती है मतलब बस घूमना है हमें, वो फाइल्स नहीं देखती, कभी कभी वो बस डिपार्टमेंट में आ रही है, देख क्या देख रही है, क्या रिकॉर्ड की स्टडी। अब वो आप दिखाइए दिखाइए नहीं, वो खुद ही कहता है तो हम वहां देखेंगे हेड ऑफिस, तो रिकॉर्ड की स्टडी, राइट।
फिजिकल कंडीशन, मैन्युफैक्चरिंग हाउस है तो उसकी कंडीशन की स्टडी, वहाँ के इन्वायरमेंट की स्टडी, भाई लोग प्रॉपर वे में है कि नहीं, लेबर्स काम कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर तरह से इन्वायरमेंट है कि नहीं, तो क्या लेबर्स आके बोल रहे, नो आई एम जस्ट गोइंग एंड जस्ट वाचिंग एज अ स्पेक्टर, लेबर स्पेक्टर, आई एम अ लेबर स्पेक्टर, आई एम गोइंग आई सी ओके यहाँ तो इट्स वेरी एक्सीलेंट कंडीशन, बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट, दिस इज प्रोसेस, मतलब द मैन्युफैक्चर मशीन्स व्हिच आर बीइंग यूटिलाइज्ड, तो इस तरह से ये बनता है आपका बिहेवियर, कोई बोलेगा कोई बता नहीं रहा, आपको देख जाके पता कर सकते हैं एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट है द डिफरेंट टाइप्स, अगेन स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर, जल्दी से खत्म करते हैं। स्ट्रक्चर मतलब जब किसी चीज का यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ फॉर्मल स्टडी, दैट मीन्स यू आर गोइंग फॉर सर्टेन काइंड ऑफ सिक्वेंशियल फॉर्म। अनस्ट्रक्चर्ड, whatever data you are getting, you are storing and keeping it up. Good, storing; bad, deleting. Participant and non-participant. When someone is watching, participant. When I am watching myself through some device, right, and I am also there as one of the person, participant. When I am not there as a person, I am just watching, non-participant. Control means when this class is controlled. But if I go in an open space for the observation, I'm controlled. Bas, this is observation method. From tomorrow, not from tomorrow. Tomorrow we will be talking of the other methods which are there: interview, schedule, questionnaire above all, and the other types of some data. Any questions, please? आपको कोई डाउट तो ना पूछे। कल का होमवर्क है, यू हैव टू प्रिपेयर अ क्वेश्चन है। देखिए मेन पर्पज ये नहीं है उसका, सिर्फ मेन पर्पज ये है कि आप बना के क्या लाते हो, ताकि मुझे अपना टॉपिक, आई हैव टू कवर माय टॉपिक, दैट इज द थिंग। ठीक, थैंक यू, थैंक यू।